Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Unacademy. And in today's session, we are going to read the chapter A House is Not a Home. Well, this is a very important chapter, a very significant chapter for class 9 students, and also a very relatable chapter because this talks about multiple teenage issues. Okay, so what a teenager feels like, what his problems can be. We'll be talking about all of that in this particular chapter. I hope you all are very excited to start the chapter with me. But before I start, I would quickly like to have a look and see who all have joined in the session. Just 1 second, everyone. Just give me a second to check who all are there in the session and say a hi to all of you. Okay. I hope you all have read the chapter already. How many of you have already read the chapter, students? Yeah. Hi, Dimple. Hello. So nice to see you, my dear. Hi, Chandni. Hi, Abhiraj. Hello. Okay. पूरी प्रिपरेशन से आई हैं आप ओके ग्रेट चलिए बहुत अच्छा बच्चों आपको क्या करना है अभी जल्दी से इस सेशन के लिंक को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है और उन्हें भी बुला लेना है यहाँ पर और चलिए स्टार्ट करते हैं और उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू माई नेम इज रुमाना आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर here at Unacademy. I've completed my master's from Delhi University. I have been tutoring for a while now. It's been more than 7 years that I have been tutoring students. And this is my referral code, that is Rumana 10. What are you supposed to do with this code? Well, students, whenever you plan to take a plus subscription or an iconic subscription, you can use this code and avail how much discount? 10% discount. Okay. Okay, everyone. I'm good, Rohit. Thank you so much for asking. Who else has read? Only Dimple has read the chapter. Okay, we'll start the chapter. This is a very amazing chapter, very relatable, very understandable, and it has got nuances in it which you all can think about कि क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्या ये प्रॉब्लम्स हम भी फेस करते हैं. ठीक है. अच्छा बच्चों जल्दी से बता देती हूँ आप लोगों के लिए एक फैंटाबुलस एग्जाम आ रहा है. दिस इज अ टेस्ट फॉर ऑल द लर्नर्स फ्रॉम क्लास 7th टू 12th जिसमें कि 7th 8th 9th 10th के बच्चे प्लस इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स फ्रॉम क्लास 11th 12th अपीयर कर सकते हैं. और इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर टेस्ट में जब आप अपीयर करते हैं तो ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है आपके लिए जिसमें कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू विन एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स एंड रिवॉर्ड्स. ओके व्हाट आर यू सपोज टू डू यू सिंपली हैव टू इनरोल योरसेल्फ फॉर द टेस्ट और इस टेस्ट के डेट्स हैं मल्टीपल डेट्स हैं. आई हेल्प यू विद दैट आई हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड देयर इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू विन अ 20 लाख कॉलेज ग्रांट. दैट्स क्वाइट अमेजिंग है ना. इसकी टाइमिंग और कैसे एनरोल करना है ये सारा कुछ मैं बता दूंगी टेलीग्राम चैनल पे. जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे इसकी लिंक भी शेयर कर दी है आप लोगों के साथ. चलिए और जल्दी से बच्चों आप में से कोई भी ऐसे हैं जो हमारे साथ एंजॉय करते हैं पढ़ना और अनअकैडमी के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको कनेक्टेड रखता है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स से. जब आप किसी कोर्स की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन कराने में आपकी मदद करता है. ठीक है तो अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं. डेफिनेटली यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज दैट आर देयर. यू हैव टॉप एजुकेटर्स at this platform. You have regular doubt clearing sessions, answer writing sessions for your assistance, mentorship, guidance. The PDF material of every class is shared with you along with the chapter with the class. ठीक है सेशन के खत्म होते ही एंड होते ही आपको पीडीएफ मटेरियल शेयर कर दिया जाता है. यू गेट प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट एंड बैच कोर्सेज. And let's take a look at the pricing which starts from 48. It actually starts from 3 months but it goes up to 48 months. आपको जो भी ठीक लगे आप वो ले सकते हो. 48 months की pricing है 833 per month which will come down to 750. How? You simply have to apply the code Rumana10. ठीक है. All right, ready everyone. 9th क्लास के लर्नर्स आ चुके हैं सारे बच्चे. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.
ओके, चल, थैंक यू सान्या, थैंक यू। ऑल राइट, सो ये लिंक है और ये लिंक आपको टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दैट सान्या। चलिए, और कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, कोई ग्लिच प्रॉब्लम जो आपको लगता है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिसप्लेस्ड है, तो आपको क्या करना है, आप रिपोर्ट कर सकते हो और प्राइज भी जीत सकते हो। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन, एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? Yeah, have you all brought your friends here? Yeah, how many of you have got? जल्दी से बुला के ले आओ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली जो नरेटिव स्टाइल है इस पोम का। वी आर गोइंग टू टॉक अ बिट अबाउट दैट, हाउ इज द नरेटिव स्टाइल स्लाइटली डिफरेंट। ओके, हाउ इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिफरेंट। सबसे पहले मुझे कौन बता सकता है, डिम्पल, सिया, एनीवन, who is the writer of this particular story? Who has written this story? Tell me quickly. Who has? What is her name? What is her name? Now, a very interesting thing to note over here is that the narrator is different from the writer. Okay, we have this preconceived notion that narrator and writer are the same. ठीक है? But come on, Dimple, you said you have read the chapter. Check your NCERT book. Yeah, so writer here is a female, if I have to tell you, but the narrator that we look at and the narrative style that is here is that of a boy. Okay, very good, Dhiraj, very good. Then I have Abhiraj, then I have Dimple, Chandani, very good. It's Zan Gaudiuso, and Zan Gaudiuso female है या मेल है, बताओ, जल्दी बता दो एकदम क्विकली। ये सोचने वाली बात है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जब आप आंसर्स रीड करोगे या गाइड बुक्स पढ़ोगे, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी व्हेन आई वाज सिक्योरिंग एंड काइंड ऑफ फाइंडिंग कंटेंट फॉर यू ऑल, कि वो क्या कर है, ये कई बार ही और शी में कंफ्यूजन है, राइट, कि राइटर ऐसा बोलते हैं। ये राइटर जो है वो फीमेल है, लेकिन जो नरेटिव स्टाइल है वो क्या है, एक बॉय है। तो उन्होंने एक माउथपीस जो बनाया है वो एक बॉय को बनाया है, जरूरी नहीं है। जैसे हैरी पॉटर की राइटर कौन है, बताओ, शी इज अ फीमेल, राइट, बट शी हैज रिटन अ स्टोरी which has a protagonist as a male, right? तो ऐसी चीजें होती रहती है। Clear everyone? Did you all get that idea? Okay, ठीक है, so we have to keep that in mind. Now, what are the themes in this particular chapter? Yeah, what? Yeah, that's right. Thank you Dheeraj, thank you for that. JK Rowling. चलिए, आ जाते हैं इस चैप्टर पे। और ऐसे इंस्टेंसेस आपको कई बार मिलते रहेंगे कि नरेटर हमारा मेल है, एक बॉय है, लेकिन इसकी जो राइटर है वो फीमेल है, जिन्होंने एक मेल फिगर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये किसकी बात है? Challenges and psychology of a teenager. There are multiple issues, multiple themes in this particular chapter. What we see, एक बार synopsis बता दूं जल्दी से, फिर NCERT पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले this story revolves around the story, the psychology and mental imbalance of imbalance, not to that extent कि वो बिल्कुल frenzy हो जाता है या he gets into any problem, not really, but this boy undergoes multiple psychological changes, okay, wherein this is what we feel at this point. तो जब हम adolescence में आ रहे होते हैं, या जब teenage, जो आपका एज भी है to some extent, क्योंकि ये अभी जिस अपने स्कूल की बात करेंगे, वो 9th से 12th ग्रेड जो आपका हाई स्कूल पीरियड होता है उसकी बात करते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इस टाइम पे? टेल मी, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू कैन, आपको लगता है कि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं लेकिन वो तो बिल्कुल सही होगा, वो होता है फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स से डिटैचमेंट या फिर आप बोल दो सेपरेशन, राइट, दैट इज समथिंग विच यू कैन नॉट बेयर विथ, यू कैन नॉट digest, you cannot basically come in terms with that. That is one thing. Another thing is about your possessions, your belongingness. ये मेरा है, ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, राइट।
And that inhibition, that reluctance to gel up with the world. ऐसा होता है ना, बहुत हेजिटेट, मम्मी बोलती चलो उस चाची के यहाँ चलो या मौसी के यहाँ चलो, एंड यू आर लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो, दिस हैपेंड विथ मी. Okay, very reluctant in going out, meeting people, and especially in a formal setup, you're very reluctant, right? ऐसा क्यों होता है? Because this is the age when you're growing up and you want to be me myself. ओके, तो द कंसंट्रेशन इज मोर अबाउट योर ग्रोथ. और इसी चीज को दिमाग में रख के हम पढ़ेंगे. ये जो बॉय हैं ये मल्टीपल चीजें फेस करते हैं. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर. एंड व्हाट चैलेंजेस डिड वी टॉक अबाउट? क्या क्या चैलेंजेस हमने देखी? फ्रेंडशिप को लेकर पोजेसिव होना, अपनी चीजों को लेकर पोजेसिव होना, अपना स्पेस चाहिए, पेरेंट्स से दूरी चाहिए, ऐसा हो जाता है इस एज में. लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं. How does the author overcome his problems? ठीक है. Now let's proceed and let's start with reading the NCERT and trying to analyze every aspect of it. ठीक है students? Yes. Reluctant का मतलब होता है unwilling. हाँ बिल्कुल सही. आप अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, नोट्स लेंगे, ठीक है, और अंडरलाइन करेंगे. क्वेश्चंस मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेदर इट बी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव. यू हैव टू कीप नोटिंग दैट. ठीक है. माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. व्हाट इज ऑकवर्ड? बिजार, नॉट नॉर्मल. समथिंग व्हिच इज नॉट ऑकवर्ड इज नॉट नॉर्मल. ठीक है. व्हाई डिड इट फील ऑकवर्ड? After leaving junior high at the head of my class, all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. Freshman क्या होता है? या freshman किसी भी ग्रेड में जब आप नए जाते हैं, ओके, तो वो freshman पीरियड होता है आपके लिए. when you are admitted or you get entry into a new class, new grade, and you are there for the first time. अब अगर फ्रेंड्स होते हैं तो वही जो ड्यूरेशन है, वही टाइम पीरियड बहुत स्मूथ हो जाता है, इजी पीजी हो जाता है ना. मजे कर लिया, उनसे बातें कर ली. पर एक नई जगह में जाकर अपना स्पेस क्रिएट करना, लोगों से जेलअप करना, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ये आप समझ सकते हो कि ये टाइम पीरियड क्या है. 8th क्लास से वो 9th क्लास में गए हैं प्रोबेबली, जैसे कि आप सभी 9th ग्रेड में हो, तो ये 8th क्लास से 9th क्लास में गए हैं. और अभी क्या होता है, आप जूनियर लेवल से सीनियर लेवल में जाते हो, राइट. सो जूनियर हाई स्कूल से आप आगे जाते हो, अपर ग्रेड लेवल्स पे जाते हो और सीनियर बन जाते हो 9th में जाकर. तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हो सकता है साथ साथ सेम जगह प्रमोट नहीं हुए हों, अलग अलग सेक्शंस होते हैं क्लासरूम में, होता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, होता है या नहीं होता है? यस, राइट राइट. स्टार्टर, ओके, बिगनर, जब आप स्टार्ट करते हो. ऑलराइट. चलो. The school was twice as big as my old school. So everything new here was good. It's not that this school was boring or this school was old and not very proper. That was not the case. The case was, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. और ऐसा होता है ना कि आपका प्रमोशन हुआ और आप किसी और सेक्शन में चले गए, आपके फ्रेंड्स किसी और सेक्शन में हो गए, तो हम कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा जो रैंकिंग है वो एक ही लेवल पे हो ताकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ रह जाएं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब हो गया यहाँ पे बिल्कुल अकेला अकेला, लोनली, नॉट सॉलिटरी. सॉलिटरी इज हैप्पी, ठीक है. ही फेल्ट आइसोलेटेड, ही फेल्ट लोनली एंड अलोन. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. And we also have a sense of love and affection towards our teachers. जो teachers हमारा care करते हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते. ऐसा होता है ना, अपने teachers से भी एक bond create हो जाता है. तो ये इतना miss करते थे अपने old teachers को that he would go back and miss them and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. And what would the teachers tell? Of course, teachers हैं, वो आपका welfare चाहते हैं, तो वो कहते थे कि तुम कुछ एक्टिविटी में अपने आप को engross करो and participate in them and stay busy.
और नए लोगों से मिलो. So make new friends, which is another big problem, right? Make new friends. कितने यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हैं? Anyone here who can say कि मैं तो ऐसे फट दोस्ती करता हूँ? Yeah. So yes, it again becomes very difficult to make new friends when you are in a new grade. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. And this is what their teachers, his state teachers would say. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time, because of course teachers are experienced and they knew that soon this person is going to make new friends, and maybe this is just the initial stage when he's feeling lonely, or because he doesn't have any friends, and probably when he'll have friends he'll forget us also. Yeah, I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. और वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि वो सिर्फ मुझे काइंड ऑफ कंफर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो सही बात थी उसकी जानकारी थी. अभी ये बैकड्रॉप था. अभी जो मेन इंसिडेंट होने वाला है, हाउस इज नॉट अ होम, क्यों टाइटल हुआ इस स्टोरी का, उस पे भी वील रिफ्लेक्ट अपॉन. सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर, नरेटर संडे आफ्टरनून, एंड बट दिस वाज द बैकड्रॉप, ओके, जिसमें कि अभी हम इनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. सो व्हाट डिड वी गेट स्टूडेंट्स? Is he in a very happy state? No, he's depressed. He's not happy. He's not having any friends in this new school. So he's probably not in a very good mood also. Okay. Now then, at the same time, इनके साथ तो कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्हें शैटर कर देता है, बिल्कुल ब्रेक कर देता है. और ऐसा हम कई बार देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है ना कि यही मेरे साथ ही क्यों होना था. ये क्वेश्चन आता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम. लेट्स रीड इट एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज. We've understood the psychology of this boy. Now let's see what happens next that actually aggravates the situation. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. So this was a general, any ordinary Sunday that he spent doing his homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace, and there was a fire going on. Okay, so this is the fireplace. ठीक है, जिसे हम हीट बोलते हैं. यहाँ पे वो फायर बर्न किया जाता है लॉग से रख के, और यूजुअली ठंडी जगहों पर. As usual, my red tabby cat was lying on top of my paper. So usually a red tabby cat is brownish in color, okay, was lying on top of all my papers. And usually pets are very like child, and we treat them, we pamper them. Yes, so she was sitting where? On the top of all his papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. So purring is what? What is purr? This is the sound of created by, yeah. Tell me, what is purr? Have you ever heard purring sound? How do cats purr? And swat? What is swatting? Who's going to tell me that? Yeah. So basically swatting is when you hit something. Okay. When you probably kind of hit a table. So it's swatting. Swat. Okay. ठीक है. All right. Yes. Now, at my pen for entertainment sake, और बस entertainment के लिए, मजे के लिए वो ऐसा कर रही होती है. She was never far from me. अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? Bond. किसके बीच का bond? Bond between the narrator and the cat, which we'll find out that this is very important, between the cat and the narrator. इसी बीच क्या हो जाता है? कुछ ऐसा जो कि, students, just a reminder that I have pinned the link for a special class which will happen tomorrow. So ये आप इस लिंक को जल्दी से स्पेशल क्लास को जा करके वहाँ पे एनरोल कर लेंगे. कल ये क्लास होने वाली है 1:15 पे. ठीक है. Now,
She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten. Kitten क्या होता है? छोटी cat जब अपने baby stage में होती है हम उसे kitten बोलते हैं. And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. Now, who is the parent of this particular cat? It is the narrator, because he has rescued her and he thinks that it is his prerogative, it is his responsibility to take care of this little kitten. And when she has grown up as a cat, of course, it was his responsibility to provide her a good life. My mother kept stoking the fire. Stoking करना क्या होता है? You usually have a rod or something in your hand, and with that you keep moving the log that is there, it's burning, to keep the house nice and warm. और ये उनकी मम्मा ऐसा कर रही थी. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed it. What was it? Fire. There was a fire. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. और अब बिल्कुल smoke, बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी. The smoke began to fill the room so quickly that I could barely see. और अचानक से ऐसा हुआ, suddenly, ऐसा नहीं कि टाइम लगा इस चीज को होने में, अचानक पूरे रूम में स्मोक फैल गया. and he could barely is hardly, okay, barely see anything. Now let's move forward and see. Groping our way to the front door. Groping is basically just quickly moving forward, holding each other. They ran to the front door. We all ran out into the front yard. और जैसे ही क्या करते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है जब भी कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर से बाहर निकलते हैं. ठीक है. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. Engulf is to cover, okay, पूरी तरह से उसे cover कर लेना, cover entirely, cover from all sides, that is engulf in flames and it was spreading quickly. और बहुत तेजी से उनके घर में आग लग चुकी थी. आप देख सकते हो, ये इमेज आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है कि कैसे पूरे घर में आग लग चुकी थी और बस वो बाहर निकल रहे थे. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back in the house. और क्या हुआ तब तक, इन्होंने क्या किया, जल्दी से वो अपने नेबर्स के पास गए, क्योंकि इनके पास तो फोन और मोबाइल था नहीं उस टाइम पे. तो इन्होंने नेबर्स को बोला कि आप जल्दी से फायर को डिपार्टमेंट को कॉल कर दे, फायरमैन को बुला ले. और जब ये ऐसा कर रहे थे और हेल्प असिस्टेंस के लिए मदद मांग रहे थे, उस टाइम उनकी मम्मा ने क्या किया, what did his mother do? She ran back to the house. अब ये क्या हुआ, क्यों गई वो, surrounded. Yes, that's correct, Sia. Thank you for that. Okay. Yes. So this can also be cover from all sides or surrounded. So that is both are the same things. Both means the same. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. और मम्मा लोग का क्या होता है concern, चीजें, राइट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ बहुत ऑर्नामेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका ख्याल, राइट. सो केयर टेकर, केयर गिवर एंड केयर टेकर्स, लाइक दे आर द वंस हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. तो वो जल्दी से गई. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस. और ये डॉक्यूमेंट रखकर वो ऐसा नहीं है कि वो बैठ गई वहां पर, वो फिर वापस दौड़ कर गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर. और इन्हें पता था कि वो क्या लेने गई हैं. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और ये क्या बोलते हैं कि मेरे फादर की डेथ कब हुई थी, जब मैं बहुत ही यंग था और मुझे श्योर था, आई वॉज सर्टेन, आई वॉज श्योर दैट वो उनकी पिक्चर्स और लेटर्स को जलने नहीं देंगी. तो ये मेमोरीज हैं जो वो वहां पे गैदर करने गई, कलेक्ट करने गई. They were the only things that she had to remember him by. और ये कुछ चीजें थी जिसके थ्रू वो उन्हें अभी भी अपने यादों में उन्होंने रखा हुआ था. Still I screamed at her, Mom, no. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. ये किसका हाथ था बच्चों? Who was holding him back? Yes, that's right, Dimple. Very good. Yes. So what was holding him back? Yeah. Who was holding him back?
अ फायरमैन, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन रिडंडेंट फ्रेज है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, और इन्होंने नोटिस भी नहीं किया था कि फायर ट्रक्स चारों तरफ आ चुके थे। I was trying to free myself from his grasp. Grasp यानी कि जब आपको कोई जोर से पकड़ कर रखता है उसे हम grasp बोलते हैं। He held on to me while other firefighters ran into the house. और इनको इनको पकड़ कर रखा हुआ था और firefighters तब तक अंदर गए थे घर के अंदर उनकी मम्मा को सेव करने के लिए। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. Okay, this is not I had, I would run. He was right. और उन्होंने ये अकलमंदी का काम किया था कि उन्हें पकड़ के रखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इन पैनिक व्हाट वी डू, जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है बहुत इमोशनल, हम बिल्कुल लॉजिकली नहीं एक्ट कर पाते, उस टाइम जो हमारा इम्पल्सिव रिएक्शन होता है हम बिल्कुल इम्पल्सिव होकर वो डिसीजन ले लिया करते हैं, विच ही न्यू वाज नॉट राइट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ठीक है एवरीवन? यस सिया, थैंक यू सिया। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर। किसने बोला ये? फायर फाइटर ने कहा कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन अ कार। और हमें पता है कि जब भी फायर होती है तो हम ब्लैंकेट से कवर करते हैं, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से फायर और इग्नाइट नहीं हो पाता है। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. और उन्हें बिल्कुल ऐसे लेते हुए लेकर वो आए। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमें पता है जहां भी ये फायर होता है वहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन बर्न हो जाता है, राइट। तो ऑक्सीजन डिप्राइव हो गई वो और उन्होंने जल्दी से उनके चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगाया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. अब ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इमोशनल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी थॉट प्रोवोकिंग, that usually what happens, we fight with people, we have a lot of glitches, we have a lot of grievances, right, कि तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। अपने पेरेंट्स से भी हम कई बार we question them, we argue with them, we have differences and discrepancies over things. But when someone falls sick and someone becomes ill, or when someone is you have that thought of losing them, then what happens, you put everything aside, है ना। तब आप क्या करते हो, सारे गिले शिकवे को साइड कर देते हो, क्योंकि तब क्या होता है कि अगर ये इंसान ही नहीं रहा तो ये नाराजगी कैसी, right? So at that point in time, what is more important is to protect and save that person more than anything else in the world. At that point in time, what is most important for you is to be with that person. बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, है ना। ऐसा होता है ना थॉट की फ्रेंड है, चलो कोई बात नहीं, ये तो अब यहाँ से जा ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई है आपका बहुत क्लोज फ्रेंड और वो कहे कि यार मैं तो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ, तो आप उससे जाकर फिर भी बात कर लेते हो अगर नाराज हो फिर भी, क्योंकि फिर उस टाइम पे क्या होता है, किसी को खोने का जो डर है वो सबसे बड़ा डर है, राइट। ठीक है, तो ये द थॉट ऑफ लूजिंग हर, इस बात पे उन्होंने सब कुछ वो सारे टाइम याद किए जब उनके साथ आर्ग्यू करते थे। हेटेड हर, वैनिश एट द थॉट ऑफ, वो सारी चीजें गायब हो गई, वैनिश एज इन इट गॉट अवे, ठीक है, इट वॉज नो मोर एग्जिस्टेड देयर। She is going to be okay, said the fireman. और ये छोटा बच्चा इन्हें देख कर जो फायरमैन थे उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगे, don't worry. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and sat there dazed. Dazed यानी कि बिल्कुल ही kind of faint position में और बहुत ही ज्यादा dizzy feel करना. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. Now here this term house has been introduced to you. ठीक है students? Yeah, it means to pull. Yeah. Now listen to me very carefully students here. Here, what is the difference between house and a home? Can anyone tell me what is that one thing that we call house and what is another thing that we call home? Tell me. Come on, come on, come on.
Is there an emotion attached to it? Tell me. Right. Thank you for writing all of that. Well, house can be a residence, a place where you reside, a residence. Home relates to family. Okay, home relates to family. It is not just about a building. So house is mostly a building, a residence, but home is where you have memories, you have family members. So you can't call any building where you are living a home. A home is the place where you live with your family. Okay, where you are, when you have memories and a sense of attachment to it. तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, अपने घर को, अपनी उस बिल्डिंग को जलता हुआ देख रहे हैं. 5 hours later, okay, later actually it's pronounced that later, the fire was finally out मतलब बुझ चुकी थी, it was no more there, it was out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. और इन्हें अब किसकी याद आई? इनकी cat की. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. और अब much to my horror मतलब now he was horrified by the thought of it. He was very horrified. Horrified as in he was very disturbed by the thought that she was nowhere to be found. He could not find her. I realized that she was nowhere to be found, that at once it hit me. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. So what happened? एक के बाद एक अब उन्हें और याद आ रहा है कि अरे मेरा स्कूल भी इतना बुरा हो गया, मैं नए स्कूल में हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मेरी कैट भी चली गई, मेरा घर भी बर्न हो गया. So nothing is left in my life. So totally devastated. Okay, he's devastated. Yeah, I was suffering loss big time. He was suffering loss big time. हमें ऐसा सोचना, ऐसा लगता है ना कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, सब कुछ खो दिया हमने. The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. और वो उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, वो जाना चाह रहे थे अपनी कैट को ढूंढने के लिए. पर फायरमैन ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि नहीं, आपको अलाउड नहीं है आज जाना. अभी वहां पे पूरा बर्न हो चुका है, स्मोक है हर जगह, हर तरफ, राइट? तो अभी आपको जाना वहां सेफ नहीं है. पर वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो अपनी कैट के बिना कैसे रहेंगे. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, मुझे जाना था. फिर भी we piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. और फिर ये किसके घर चले गए? अपने grandparents के घर चले गए उस रात को spend करने के लिए. The next day, Monday, I went to school. अगला दिन क्या था? मंडे था, क्योंकि हमने देखा है संडे को वो होमवर्क कर रहे थे और टेबल पे बैठी थी उनकी कैट, उनके पेपर्स के साथ कुछ कुछ खेल रही थी, मार रही थी उसके ऊपर. एंड देन द नेक्स्ट डे वाज अ मंडे, तो मंडे तो स्कूल जाना पड़ेगा. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. वो भी casualty यानी कि loss, उसमें जो नुकसान हुआ वो उसका वो भी बर्न हो गए फायर में. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. और फिर उन्हें अपनी आंट से टेनिस शूज बोरो करना पड़ा क्योंकि स्कूल शूज नहीं थे उनके पास. Why couldn't I just stay home from school? क्या मैं स्कूल जाना जरूरी है? इनका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. अब इन्हें embarrassment क्यों थी? What was he embarrassed about? That now he would go to school, people will ask him to narrate the same episode which he didn't want to talk to about, right? My mother, which he didn't want to talk about. So my mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. Everything means everything that had happened the previous day. The clothes I was wearing looked weird, क्योंकि of course fire में burn हो चुके थे, काफी कुछ उस पे smoke dust आ चुका होगा. I had no books or homework and my paper bag was gone.
I had paperback as in all the hard copy जो होती है आपकी paperback as in your books, right? No books, nor or homework, and my paperback was gone. I had my life in that backpack. उस backpack में सब कुछ था इनका स्कूल की सारी चीजें थी. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life it was going to be this way. और एकदम frustration वाला time होता है ना जब बच्चों के अंदर क्या हो जाता है कि मुझे बिल्कुल नहीं करना, लाइफ को लेकर एक ज़ील ख़त्म हो जाती है, एंथुजियाज़्म ख़त्म हो जाता है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई फ्रेंड्स नहीं चाहिए. ऐसा ऐसा स्टेज होता है या नहीं बताओ. वियर्ड इज समथिंग अनयूजुअल, लुकिंग वियर्ड, अनयूजुअल, एबनॉर्मल. ओके, एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, वियर्ड, बिजार, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं. ठीक है जी. हेलो समर्थ, हेलो हेलो, हाय. ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता है बताओ. यू ऑल आर इन द सेम एज ग्रुप, राइट? व्हेन वी हैव ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन आवर माइंड्स, ये क्या है, ऐसा क्यों है, आई डोंट वांट टू ग्रो अप, इफ दिस इज लाइफ आई डोंट वांट टू फेस इट. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट नथिंग इज कांस्टेंट एंड टाइम चेंजेस एंड इट हील्स एवरीथिंग. सो आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई. अभी क्या, बिल्कुल ये सुसाइडल टेंडेंसी है ना. देखो कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे, दिया जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपको लगता है कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता था. आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स आर नॉट देयर विथ मी एट स्कूल, आई हैव लॉस्ट माई हाउस, एवरीथिंग हैज बर्न्ड, या माई कैट, आई हैव लॉस्ट माई पेट, माई डियर डार्लिंग कैट, आई हैव लॉस्ट दैट. Yeah, so when you just want to curl up is to just roll over or lie at a place in a cuddling manner and just die. I just want to die, I don't want to live, है ना, ऐसी feeling. लेकिन every cloud has a silver lining. I walked around school like a zombie. Zombie क्या होता है, जल्दी बता दो. zombie क्या होता है? मेंटी का लिंक दिया है अभिराज आपके पास. स्पेशल क्लास में होगा एक पोल, मेंटी नहीं होगा, वो आपके साथ, वो आप शेयर कर दिया गया है, आप उस पर जाके क्लिक कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए. हाँ डिम्पल, है ना, ऐसा बहुत हमें लगता है, ऐसे स्टेज आता है. सो ज़ॉम्बी इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, जब आप तो वॉक लाइक अ ज़ॉम्बी मतलब somebody who's deprived of any emotion and feeling. Who's walking like a zombie is somebody who's walking in a manner showing no enthusiasm, just like, you know, like this, like this image that you can see, without any zeal, without any vigor. Okay, everything felt surreal. Surreal means what? Something which was not real. Okay, something extraordinary but in a bad manner, something which cannot happen. ऐसा कैसे हो सकता है? I wasn't sure that what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat, all had been ripped away. Ripped away यानी कि taken away, separated from him. Okay, separated, taken away. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. और जब वो वहां से गुजर रहे थे, जो इनका घर हुआ करता था, इन्हें एहसास हुआ, he realized that, you know, how much damage, मेरा घर पूरा खत्म हो चुका है. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जो कुछ भी बचा था वो भी क्या किया इन लोगों ने, जब उस फायर को ये लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, they were trying to put it off. What did they do? They put those water and chemicals which actually ultimately affected the paintings and whatsoever was left. So that was also destroyed. That was also not saved. That could also not be saved. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी मम्मा ने लास्ट में जाकर मुझे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, हो सकता है वो कुछ सर्टिफिकेट्स हों, स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट्स हों, उनके अपने कुछ डिग्रीज हों, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, जिसे हम बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं डॉक्यूमेंट्स. तो उनकी मम्मा ने जाकर सेव कर लिए और ऑफ कोर्स
उनके फोटो एल्बम्स एंड स्टफ वर सेव्ड. सो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है बच्चों की, व्हाट वर द आइटम्स सेव्ड बाय द मदर. Okay, this can be one very important question. But my cat was gone and my heart ached for it. Ache karna matlab, what is aching? Pain, right? Ache is a pain. So his heart was aching for it, paining for it. There was no time to grieve. There was no time to repent, to show remorse, okay, to be sad about it and thinking about it and pondering and brooding. Yeah, so there was no time about for it. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to buy some clothes for school. तो ये जो दोबारा जाके अपने घर से जब देखते हैं तो ये नज़ारा, उनकी मम्मा कहती चलो चलो यहाँ से चलो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें अब नया घर देखना है. ओके, और फिर we would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. और स्कूल के लिए इनके पास कपड़े भी नहीं थे. ठीक है. We had to borrow money from my grandparents because there was no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मनी बोरो किए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. Everything had gone up in smoke. All of that was up in smoke. That means it vanished. It disappeared. Okay? That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Rubble क्या होता है? Debris, rubble यानी कि जो कि left over है. ये सारे आपको ये words important हैं. Rubble and debris, these refer to the left over. ठीक है, जो कुछ भी बचा था जलने के बाद उसे क्या किया जा रहा था, वहां से क्लियर किया जा रहा था. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. और वो किस इंतजार में घर जाते थे घूमने के लिए स्टूडेंट्स? What was his only hope? That he may find his cat. Okay, so he would go and check कि अभी ये लोग जो क्लीन कर रहे हैं कहीं मेरी कैट अंदर से निकल के आ जाए. उन्हें ये उम्मीद नहीं थी शायद कि वो जिंदा होगी. Okay, he had this idea that she might have died. Yeah, but he just wanted to have a look for the satisfaction of his heart. एक होता है एक last time देखने की एक desire होता है कि एक that will ultimately suppress those angst that you have. तो वो बस उसे एक बार देखना चाहते थे कि वो किस कंडीशन में है. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe. Robe is the dress that he wore. Crawl into my pocket to fall asleep. Robe is the dress. I was missing her terribly. और बुरी तरह से उसे वो मिस कर रहे थे और उसकी हर एक आदत, जिस तरह से वो उनकी कंपेनियन थी, हर वक्त उनके साथ. टैग अलोंग इज टू अकम्पनी हिम. टैगिंग अलोंग इज टू अकम्पनी. ऑलराइट, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर मी क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़े पे जिस तरह से वो चढ़ जाती थी, क्रॉल करती थी, मेरे पॉकेट में जाकर सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. और ये बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहे हैं. Okay, students, is this interesting? Are you all enjoying this? This is a very interesting chapter. I know there are a few words that you might find difficult. That is why I'm giving you the meaning simultaneously. Please take a note of them. Okay, and of course, I'll have a poll session tomorrow. So, इस chapter से related सारे questions पढ़ लेना. It always seemed that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. Plight matlab bad condition, bad situation. Okay? बुरी स्थिति जिसे हम कह सकते हैं. plight उनकी परेशानी, उनकी दुविधा. I was embarrassed as if somehow I were responsible. ठीक है, अब आप देखोगे हमेशा हम I के साथ was बोलते हैं और सेम ही सेंटेंस में हमने I were बोला है. ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों. यहाँ पे सेम सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पे I was है और यहाँ पे I were है. तो आपको समझना होगा that I was is used usually because I refers to a single person, but whenever we refer this with if, हम किसी if clause के साथ यूज करते हैं, किसी imaginary situation के साथ यूज करते हैं, तो हम I के साथ were बोलते हैं. याद रखिएगा.
What a way to start off a new school. और वो कहते हैं कि क्या जिंदगी है, कैसे मैं अपना ये नया स्कूल स्टार्ट करूं इतने सारे बैड मेमोरीज के साथ. This was not the kind of attention I was looking for. The next day at school, because now whenever he was introduced to someone, what would they ask about? Not about his hobbies, not about his interests, likes and dislikes, but they would ask about his house, about the incident that happened, right? तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिससे भी नई दोस्ती होगी वो मुझे क्या पूछेंगे मुझसे, और तुम्हारे घर के ऐसा हो, तो दे विल पिटी, दे विल शो पिटी, राइट? जो वो ऐसा नहीं चाह रहे थे. हम दोस्तों के साथ ऐसा नहीं चाहते कि वो मुझे पिटी करके अपना फ्रेंड बनाए. करेक्ट. सो दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन. वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. अब लोग और वियर्ड बिहेव कर रहे थे, और स्पेशली इस टाइम पे जब आप टीनेज होते हो, अडोलेसेंस होते हो, तो ऐसा होता है ना कि कौन मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसने मुझे कैसे टोन में मुझसे बात करी, ये सारी बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें अफेक्ट करने लगती हैं. आफ्टर अ टाइम यू बिकम थिक स्किन्ड. तब आपको पता होता है कि राइट पीपल कौन है, रॉन्ग पीपल कौन है, हमें किन की बात से अफेक्ट होना चाहिए, कौन मैटर करते हैं, कौन नहीं मैटर करते हैं, राइट? वो सब मेच्योरिटी के साथ आपको समझ में आता है. लेकिन जो ये जो एज होती है, स्पेशली टीन एज है, 9th ग्रेड है, 10th ग्रेड है, यहाँ पे आप बहुत जल्दी लोगों की बातों से अफेक्ट होने लगते हो. और वही हो रहा है इनके साथ कि ये जब स्कूल जा रहे हैं तो और लोगों का बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं कि लोग अननेसेसरीली सिंपैथेटिक हो रहे हैं, पिटी शो कर रहे हैं, तो इन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. लॉकर यानी कि दैट एरिया दैट इज गिवन, और यूजुअली यूके में और यूएस में बच्चों को लॉकर प्रोवाइड किया जाता है. आई थिंक अब इंडियन स्कूल्स में भी होते हैं, तो उसमें वो अपना सारा सामान रख सकते हैं और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया होता है. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. मिलिंग मतलब व्हाट इज मिलिंग? Asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. क्यों milling कर रहे थे? Why were the people milling around him and asking him to do it fast, fast? क्या करने वाले थे ये लोगों ने? क्या प्लान कर रखा था इनके लिए? Yeah, everyone, tell me. देखो, I'll tell you. Think about it. This is a very important chapter that will make you think, right? So, of course, people were roaming around him or surrounding him. Okay, surrounding him, moving around him. Milling will be more about moving around him. ठीक है. और लोगों ने कुछ प्लान कर रखा था इनके लिए, इसीलिए वो उनके आसपास घूम रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, कहते जल्दी करो, जल्दी चलो. और ये बड़ा वियर्ड लगा इन्हें, स्ट्रेंज लगा, दैट व्हाई आर पीपल बिहेविंग लाइक दैट, एक्टिंग लाइक दैट अराउंड मी. बट देन ही थॉट कि अब कुछ भी अनयूजुअल हो सकता है मेरे साथ, सब कुछ ही स्ट्रेंज हो रहा है. सो इट डिडंट सरप्राइज हिम एट ऑल. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम. मतलब मुझे शोव करना, शोव, यू ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज शव, जिससे हम यूजुअली सॉइल को डिग करते हैं, राइट? तो शोव यानी कि जबरदस्ती अंदर मुझे भेज रहे थे. देन आई सॉ व्हाई. देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. और तभी इन्होंने क्या देखा? व्हाट डिड ही सी? दैट एक टेबल पे, ओके, इनके लिए बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रिपेयर करके रखी थी, सेट करके रखी थी. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. It was, I was overcome by emotion. और इन लोगों ने क्या किया? बिना इनके फ्रेंड हुए, इनके फ्रेंड भी नहीं थे अभी ये लोग, और इन लोगों ने क्या किया इनके लिए? ये सारी चीजें एक टेबल पे प्रिपेयर करके, सेट करके, बेसिकली प्रॉपरली रखी थी. और ऐसा लगा इन्हें जैसे ये क्रिसमस हो इनके लिए, राइट? सो क्रिसमस में क्या होता है, क्या क्या इक्वेशन, यहाँ पे जो मेटाफर यूज किया गया है क्रिसमस का, वो क्यों यूज किया गया है? कंपैरिजन दिखाने के लिए, दैट यूजुअली व्हेन डू वी गेट गिफ्ट्स? in the time of Christmas. So this looked like Christmas. It was not Christmas, but it looked like Christmas. It was like Christmas. People who had never spoken to me, वो लोग जिन्होंने कभी इनसे बात तक नहीं करी थी,
They were coming up to me to introduce themselves. वो खुद आकर इनसे बात कर रहे थे. I got all kinds of invitations to their houses and everybody was inviting him to their houses or his or her house. Their genuine outpouring of concern really touched me. और ये कोई दिखावा नहीं था. This was not a show off. This was a genuine outpouring of concern. और ये लोग genuinely बहुत concerned थे इनके लिए और ये बहुत ही touched थे उससे. In that instant, I finally breathed a sigh of relief. A sigh of relief is चैन की सांस, है ना? He was ultimately, relaxed. Sigh of relief is to relax. And thought for the first time that things were going to be okay. और पहली बार इन्हें एक ray of hope दिखी that now things are going to be okay. Fine students, is this understandable? I made friends that day और उस दिन इन्होंने दोस्त बनाए. A month later, I was at my house watching them rebuild it. But this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. अब धीरे धीरे क्या होने लगा? चीजें चेंज होने लगी, circumstances चेंज होने लगी, situation improve होने लगा. He also had made a few friends back at school. Now his home was also getting rebuilt. Okay, so the situation was changing, his condition was improving, rather, the entire circumstance, the entire situation was changing and improving. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now, you have to read this once. Just take 2 minutes or 1 minute and read this. Everyone, I request all of you, whosoever is watching the video, please read this. It took a fire for me. मतलब मुझे ये चीज रियलाइज करने में अपनी ये जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी यानी कि यू आर इन अ पोजिशन व्हेन यू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट थिंग्स, कि पता नहीं कोई मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा. सो यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड इट टुक अ फायर फॉर मी. मुझे किस चीज के बदले ये चीज मेरी, ये जो मेरा जो फियर था, मेरा ये इनसिक्योरिटी थी, अंडर कॉन्फिडेंस था, ये मुझे किस चीज के बाद मिला? एक फायर के बाद मिला. तो कितना बड़ा इन्हें कॉस्ट कह सकते हो, कितना कुछ पे करना पड़ा इसके बदले में, जो चीजें इन्हें नॉर्मली आ जानी चाहिए थी. Right? Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. ठीक है, अभी उन्हें क्या एहसास हुआ कि घर फिर से बन रहा था और इनकी लाइफ भी फिर से नॉर्मल ट्रैक पे आ रही थी और फ्रेंड्स के आ जाने से थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, और जब वो वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे और डिजाइन कर रहे थे कि मेरा न्यू बेडरूम कैसा होगा, तो उन्हें एक पीछे से आवाज आई. और ये आवाज किसकी थी? Does this belong to you? क्या ये आपका है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और अब I couldn't believe my eyes एक बहुत ही amazing phrase है बच्चों, ठीक है? You should use this one, which means you show a lot of surprise. Okay, that I couldn't believe my eyes. I couldn't believe what I was seeing. मुझे ऐसा लगा कि ये आंखों का धोखा है, ये रियलिटी नहीं है. Okay, so a woman was standing there holding my cat. I leapt up is to just leap करना, उस पर बिल्कुल ऐसे उसकी तरफ दौड़कर चले जाना. And grabbed her out of the woman's arm, और उन्होंने जल्दी से इसे अपने आर्म्स में ले लिया. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. और ये क्या था? What was that beautiful orange fur? Yeah, tell me. Come on. Everyone answer this. Hi Deepa. Hello. Hi Dheeraj. Tell me, answer. So she purred happily और फिर से वो अपनी आवाज निकालने लगी, पर करने लगी. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. It was a very happy moment, है ना? फिर से reunite होना एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है और ये reunite हुए और उन्होंने अपनी कैट के पास जाकर बहुत सारा रोए. ठीक है? Yes, very good. So remember this beautiful orange fur is referring to the cat. Okay?
So this sweet surprise that came to him while we sat there on the curb planning. Okay, we read that, है ना? Okay, my friends were hugging me and jumping around. This was a sweet surprise that came to him. Apparently, my cat had been so freaked by the fire, freaked as in she got very disheveled, she was very, very disturbed by it, that she ran over a smile away. Freak is to basically become panic, right? You freak out. Suddenly you're in a panic state. Okay, so in a panic state, she was freaked. She was in a panic state and she ran to over a mile away. और वो 1 माइल दूर चली गई थी दौड़ती हुई, इतनी ज्यादा वो डर गई थी. Her caller had our phone number on it, but our phone had been destroyed and disconnected. उसकी कॉलर पे इन्होंने अपना फोन नंबर लिखा तो था, लेकिन फोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, fire में, and nobody could connect with them. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. और इन wonderful women ये जो थी, इन्होंने क्या किया, बहुत उसे अपने पास रखा और मेहनत की, ढूंढा कि ये किसकी कैट है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और कहीं ना कहीं उन्हें पता था, इसे हम कहते हैं टेलीपैथी, राइट? व्हाट इज दिस कॉल्ड? टेलीपैथी. जब आप बिना कहे किसी की बात समझ जाए, दैट इज टेलीपैथी. एंड समहाउ शी अंडरस्टूड ये ऐसी कैट है जैसे कोई जरूर मिस कर रहा है. सोरली मिस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंसली मिस कर रहा है. ओके. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. Diminish करना मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था, गायब हो रहा था. ओके, तो अब धीरे धीरे जैसे इन्होंने लेकर अपनी कैट को अपने पास बैठा कर ला, उसे ऐसे मोड़ कर बैठना और अपने लैप में, और वो बिल्कुल कर्लिंग पोजीशन में थी. तो ये अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो जो बुरी यादें थी, जो ट्रेजेडी हुई, जो चीजें अच्छी नहीं हुई इनके साथ, वो धीरे धीरे वैनिश होने लगी, डिमिनिश होने लगी, और अब उन्हें फिर से उनकी जो हैप्पी स्टेट था वो reinstate होने लगा. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. बहुत ही beautifully written है कि gratitude यानी कि a lot of, this means a lot of humbleness, thankfulness. Okay, if you show gratitude to someone, you are thankful. Okay, so sorry, and miss ho gaya, thankful for my life. So he was now thankful for his life because it was saved, for his new friends, and the kindness of a stranger. On a stranger जो कि इनकी cat वापस लेकर आई इनके पास. The loud purr of my beloved cat. Okay, and remember that lover is a male lover and beloved is when you love someone, and if it is a female usually, then you call it a beloved. Okay, so my cat was back and so was I. मेरी cat वापस आ गई और मैं, क्योंकि मैं भी खो गया था कहीं, ये भी कहीं खो गए थे, right? So he was also back. ठीक है, हाँ, kind of very good चांदनी. जरूर डिम्पल, कल होगा पोल. तो आपको आना है कल, कहाँ पे? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशल क्लास में. चैप्टर कैसा था पहले, अभी हम इसको थोड़ा सा सिंक इन होने देंगे. इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग chapter. I think it was very heart touching. What are your thoughts on reading the chapter and understanding this one? What was the first thought that came to your mind after reading this chapter? Everyone, whosoever is watching this, please quickly mention and tell me. What was that first thought that came to you? Are you thankful? Are you grateful for what you have? Yeah. Do you thank God? Do you thank your family? Do you thank your mama, your parents for being there for you? Do you thank that you have a house? Yeah, this may sound like a moral science lecture, but students, this story is actually going to give us, this story is giving us a very beautiful message that we have to, we may nag, we may be very, very pessimistic about things, but then ultimately we have to be thankful for all that we have, whether it be a house, whether it be a family, friend, anything.
Okay, so please share your thoughts. Oh yes, oh yes. So I am going to give you this homework, क्योंकि अभी आप मुझे आंसर नहीं कर रहे हो चैट में, सिर्फ डिम्पल ने किया है, तो योर थॉट्स, ओके। एंड एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं दे रही हूं आपको, आपको चूज करना है, जो भी आपको ठीक लगेगा आप वो आंसर करेंगे। ओके, श्रावरी, श्रव्या, श्रव्या, चांदनी, डिम्पल, दीपा, एवरीवन, ठीक है। So question number one question is that what were the feelings of the narrator when he got his cat back? Okay, quite rhyming ना? तो ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि क्या फीलिंग थी उनकी जब उनकी कैट वापस उनके पास आ गई और क्या उन्होंने रियलाइज किया। ठीक है। Oh yes, Deepa, why not? Why not? And I'm so glad that you're 10th and you're coming to watch this session. Hi, Ishan. Please answer this homework question, everyone. ठीक है, प्लीज आंसर दिस। मैं एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको ये लगे कि होमवर्क है। Just 1 second. So this is your homework HW. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक। और आपको अगर मजा आता है हमारे साथ अनअकैडमी पे पढ़ाई करने में, तो आप हमारा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। और इसमें क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो स्पेशली बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है आपको, जैसे पर्सनल मेंटोर है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, वीकली रिपोर्ट कार्ड, आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। We also provide study planner for you to study well, and of course all the benefits that you get from Unacademy Plus subscription. You can take a look at the pricing that it offers you. So there is a wide range of it, whichever suits you, whichever you find best suited for yourself, you can go for that. So 3 months, 6 months, 9 months, 12, 15, 18, 24, 36, whichever you find best fitted, you can go for that. Of course 1729 per month is the pricing for 48 months, but as soon as you put in this code over there, Rumana 10, you get a flat 10% डिस्काउंट। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इस कोड को यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और प्राइसिंग यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। 18331650 हो जाएगा, 201800 हो जाएगा, 1944 will come down to 1750, so on and so forth। आप लोग जल्दी से इस चार्ट को देख लीजिए, और अगर प्लान कर रहे हैं लेने का तो एकदम फटाफट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड हाउ टू मोटिवेट। किस चीज के लिए शान, जैसे कि आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो अनअकैडमी इतने सारे अमेजिंग एग्जाम्स लेकर आता है आपके लिए, है ना। तो हमारे पास प्रोडिजी टेस्ट जो होने वाला है, ये आपको 20 लाख कॉलेज ग्रांट दे रहा है। क्या करना है, बस एग्जाम में अपीयर हो जाना है थोड़ी सी पढ़ाई के साथ। इसका सिलेबस मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, नॉर्मल सी जो आपके ग्रेड के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप अपेयर करिए, क्योंकि ग्रेड वाइज एग्जाम हो रहा है ना। और इसमें आपको ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग मिल जाती है। कोड आपको रुमाना 10 यूज करना है, और अभी सेशन के बाद जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर लेना, इसे इनरोल कर लेना, क्योंकि सेशन इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। आप देख सकते हो स्केड्यूलिंग क्या है इसकी, क्लास 7 से 8 की 12 नून, 23rd, 29 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को होगा। और ये टाइमिंग है, आप 9th और 10th कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप ये टाइमिंग नोट कर लीजिए अपने लिए, और इस टाइम को फ्रीज कर लीजिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स इन एवरी टेस्ट। ये जो टेस्ट होने वाला है आपका ऑल इंडिया टेस्ट, इसमें अमेजिंग रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें रैंक 1 विल गेट अ मैकबुक एयर, रैंक 2-3 विल गेट एप्पल आईफोन, रैंक 4-5 विल गेट एप्पल आईपैड, 6-40 विल गेट एन अमेजॉन इको डॉट, 41 to 100 विल गेट अमेजॉन वाउचर्स। और सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, 100% स्कॉलरशिप रैंक 1 to 10 सिक्योर करने वाले बच्चों को। रैंक 11 to 25 will get 75% scholarship, rank 26 to 100 will get 50% discount। Of course this is the scholarship that you get here, और ये आपके
101 से लेकर 200 रैंक तक के बच्चों को 25% मिलेगा और 201 से लेकर 500 तक के रैंक को 15% मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल मिस ना करें। एज अ टीचर मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे टेस्ट आप जरूर लिखा करें, है ना, क्योंकि देयर इज नथिंग टू लूज। प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 31 जनवरी तक अमेजिंग ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स या उससे अबव का लेंगे तो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा K-12 सब्सक्रिप्शन आपको साथ साथ मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 12 मंथ्स या उससे अबव का लेंगे तो 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर मिल जाता है और 10% डिस्काउंट तो आप वैसे भी अवेल कर ही रहे हैं और फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर को मिलता है। बच्चों स्पेशल क्लास की लिंक शेयर कर दी गई है चैट में, आप उसे चैट में पिन भी कर दी गई है, ठीक है, तो आप जरूर अटेंड करना और यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन होगा। इसी चैप्टर के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ मैं कल, तो प्रिपेयर वेल, watch the session one more time, focus on the important words that have been used and also on the psychological and emotional aspect of this chapter। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारी इमोशनल बातें बोली गई हैं और बहुत सारा ऐसा साइकोलॉजिकल ग्रोथ और ये सब दिखाया गया है, टीनेज के इश्यूज के ऊपर बात किया गया है। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे एनालिसिस एक्सपेक्ट की जाती है। तो आप ज्वाइन करेंगे और पोल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लीडर बोर्ड में compete करेंगे, सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आपको और क्वेश्चन टैब भी होता है जहाँ पे अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, watching the video and participating in the chat box. I will really appreciate Dimple. Very good, Dimple. Thank you so much for being on time every day. And Chandni, very good, Chandni. Please answer the question in the comment section. You will have to give the test, Ishan, and you may get scholarship. Okay? ठीक है? Okay. All right. Thank you so much, everyone. I'm going to wrap the session over here. I hope you all understood. नहीं समझ आया फिर से वीडियो देखना और कल की स्पेशल क्लास में जो भी डाउट्स अगर बच्चे होंगे तो पूछ लेना, ठीक है? Bye bye, everyone. I hope you all have liked this session and shared this session with all 9th grade students. Bye bye.